I've carried weight beneath my ribs, the kind that grinds like metal to 'em, where every memory felt like rust from battles fought before I was born. But even when the world grew sharp and time pressed heavy on my chest, I felt a pulse that wouldn't die, a stubborn rhythm built to test. It didn't roar, it didn't shine, it simply beat when strength was thin. A worn down thump that kept its pace through every loss I held within. Through broken nights and true sun need, I stood beside my rusted heartbeat. I've known the days where doubt runs deep, the kind that chills a man to bone, where even breathing feels like work and every step feels walked alone. But still that pulse inside my chest refused to fade, refused to yield. It tapped its rhythm, slow and rough, like I burned buried in a field. It kept its time when hope was scarce, when all the light around felt weak, when shadows linger near my hands and try to tear out what I seek. But I stayed firm through cold and heat, guided by that rusted heartbeat. Rusted heartbeat, strong and slow, pushing through the weight I know. Through fire sting, through winter's bite, it kept me warm through endless night. No storm could crush, no fear could cheat the quiet power of a rusted heartbeat. Through ash and earth beneath my feet, I rise again, my rusted heartbeat.
Silent sparks burn. I walked through days that felt like rust, where every thought was hard to hold, where time moved slow across my skin and turned my quiet fire cold. But even in the weight of that, beneath the pressure and the strain, I felt a rhythm in my chest that kept on pulsing through the rain. It wasn't loud, it wasn't fierce, it didn't rise with sudden glow, just steady strength that kept me grounded, proof that iron breathes slow. And through the years, through loss and fight, I learned to trust that inner light. I've seen the world try hard to bend the parts of me that wouldn't break. I felt the pull of darker nights that tried to claim what I could make. But still I moved through dust and fear, through hidden wounds and quiet aches. For men aren't shaped by perfect days, but by the storms a lifetime takes. And in the silence of those trials, I found a truth I didn't know, that strength is not the roar of fire, but how the iron breathes slow. A patient force, a tempered core, a heart that learns to fight once more. Iron breathes slow through every fall, through every push, through every wall. It holds its heat, it keeps its tone, stands when everything is gone. No fear can shake, no doubt can throw a steady way that iron breathes slow. A quiet fire beneath the blow, a man of depth where iron breathes slow. Iron breathes slow. I felt the cold of empty rooms, the echo of a fading will. But somewhere deep I kept a flame that didn't die, that wouldn't still. It warmed the corners of my voice, it gave my tired bones a stand, a strength no storm could tear apart, a truth no fear could reprimand. Not all resilience comes in heat, not all resolve must blaze or roar. Some power moves in slower breaths, becoming more than what came before. And in that heat I came to know the way true iron breathes slow. Let shadows fall, let tempests rise, the iron hold goes beneath the lies. A quiet burn, a grounded flow, the soul rebuild where embers glow. Iron breathes slow, through every night, through every doubt, that dims the light. It keeps its fire, it keeps its glow. A steady truth, a steady truth. No storm can slow through ash, through pain, through ebb and flow. I stand alive. My iron breathes slow. Iron breathes slow.
There's rust on my reflection, shadows clinging to my skin, a map of everything I've carried, every place that I've been in. The mirror shows the scars I earned, the lines I forged through fire's breath, the remnants of a younger man who fought his way through dust and death. But I don't flinch at what I see, I don't deny the tarnished frame, for rust is just the proof of living, not a symbol carved by shame. The world may judge what time has done, but I see strength in every section. आप एक सेकेंड साहिल जी, तो आप क्या पूछ रहे हैं? वांट टू शेयर रीसेंट एंट्री, वांट टू लर्न हाउ टू एंटर द ट्रेड। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि रीसेंट एंट्री क्या हो सकती है और मेरा इंसाइट वगैरह क्या है इस चीज़ के मार्केट में। तो आपको देखो, एक चीज़ बताता हूँ मैं इसमें क्लियर ना। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो मैंने शायद कल रात को भी एक छोटी सी लाइव स्ट्रीम टेस्ट करी थी कि कैसे मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ, और उसमें मैंने क्या सोचा था कि आप देख रहे होगे कि ये जो फेयर वैल्यू गैप बना था, ये बियरिश वाला, और ये एंड टाइम पे बना था आफ्टर 3, मतलब जो लंदन ओपन के बाद बना था, ठीक है। और ये एक छोटा सा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा है, ये बहुत रीसेंट बाई साइड टाइप का कुछ था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट फ्लैट खुले या थोड़ा सा गैप अप खुले, ठीक है। इस टाइप से खुलने के बाद मार्केट एक बार यहाँ पे ट्रेडर्स को ट्रैप कर सकती थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप होने के बाद मोस्ट ऑफ क्या होता है, देखो अगर आपका इनसाइड देखो, एक बार गैप अप खुला मार्केट, फिर वापस नीचे चला गया। मोस्ट ऑफ लोगों ने यहाँ पे, जिसने भी एंट्री ली होगी बाई साइड में, वो यहाँ पे ट्रैप हुए, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे ट्रैप किया गया और यहाँ पे फिर से उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोगों ने मतलब एक कहते हैं कि सेलिंग शुरू कर दी होगी इसके ऊपर, ये ब्रेक होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए, पहले बायर्स ट्रैप हुए, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, देन वो अगर मार्केट अपसाइड जाती, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स ट्रैप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे ज़्यादा इस कैंडल पे जो बाइंग और सेलिंग आई ना, वो इस पॉइंट पे आई है। देखो ये रेड है यहाँ पे और यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग इस टाइम इस कैंडल पे आई है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी पहले प्राइस यहाँ पे आता, सेकंड हाफ के आसपास यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आप हम लोगों को ये पूरा देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है, ये मूव देखने को मिलता। इनफैक्ट जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, अगर आप देखोगे इसमें, तो ये कौन सी थी, 22,083 के आसपास की थी। ये कैसे थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर लाइन चार्ट पे अगर आप आओगे और डेली पे आओगे, तो आपको दिखेगा ये वाली लिक्विडिटी आपको क्लियर दिखेगी। ये देखो, मैं कैंडल की लिक्विडिटी से ज़्यादा जो लाइन चार्ट की लिक्विडिटी होती है उस पर ज़्यादा मैं रिलाई करता हूँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि पहले एक बार एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म तो मार्केट को ब्रेक करना चाहिए था, बट सिनेरियो ये हो चुके हैं कि अभी वॉर वगैरह का, कि इतना मतलब इम्पैक्ट वाला मूव आ रहा है एकदम से ना, कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, या फिर आपको मौका नहीं मिल पा रहा मार्केट में घुसने का, ठीक है, एंट्री होने का मौका नहीं मिल पा रहा। बट इसके बाद की जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो ये सब है यहाँ पे, कि यहाँ के बाद मैं मतलब बिल्कुल ही सेलिंग बंद कर दूँगा यहाँ पे। ये मेरा इनसाइट बहुत पुराना है, ये अक्टूबर का है, 2023 का लो लगा था इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे टैप किया नहीं। इनफैक्ट मैंने काफ़ी बार सोचा था कि मार्केट यहाँ पर भी नीचे आ सकती थी, टैप कर सकती थी। ये वाला जो एरिया ना, ये यहाँ से भी मार्केट टैप कर सकती थी इसको। अगर आप देखोगे यहाँ से, अगर इसको मैं यहाँ पे इस टाइप से प्रीमियम डिस्काउंट लगाता हूँ, तो ये मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था कि ये यहाँ पे इसने बाय साइड को टेक आउट किया, देन नीचे ड्रॉप, फिर अप साइड जाके फिर यहाँ पे एटलीस्ट 50% तक आती या यहाँ पे टैप करती, ठीक है। लेकिन बट मार्केट ने इसको अनमिटिगेटेड अभी तक छोड़ा हुआ था,
ठीक है। इसके बाद ये पूरा इनसाइट यहाँ पे आया, यहाँ भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है नीचे मार्केट चली जाए, बट फिर भी यहाँ से एक दोबारा से बाय साइड का मूव आया। अभी क्या हो सकता है, देखो ये एरिया जो इन्वेस्टिंग करने के लिए सोच रहे हैं कि ये मार्केट में मौका कब मिलेगा इन्वेस्टिंग करने का, तो सबसे अच्छा मौका ये है। इसके बाद ना ये जो 19,000 का लेवल है, इसके बाद बहुत सारे अच्छे शेयर्स हैं, अगर आप देखोगे इसमें बहुत सारे शेयर्स हैं। तो यहाँ से इन्वेस्टिंग मैं बिल्कुल शुरू कर दूंगा, भले यहाँ से मार्केट 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट और नीचे चली जाए, और शायद यहाँ तक भी चली जाए, ठीक है। ये बहुत यहाँ तक जाने का एक्सपेक्टेशन नहीं है, बाकी कुछ कह नहीं सकते, वॉर वगैरह का जो सिचुएशन है उसकी वजह से। और जैसे क्रूड ऑयल ऊपर जाता रहेगा तो मार्केट में प्रेशर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो यहाँ के बाद जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ के बाद तो बिल्कुल ही अपना वो बंद कर सकते हैं, मतलब सेलिंग बंद कर सकते हैं। और अभी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है कि फ़िलहाल मार्केट काफ़ी गैप डाउन खुली है, सीधा डायरेक्ट लिक्विडिटी टेकआउट हो चुकी है। तो अभी अभी फ़िलहाल अभी अभी के लिए कोई मूव नहीं है। अगर सेकंड हाफ में कुछ मूव मिलता है तो ज़रूर इस पे मैं अपडेट करूँगा, बट फ़िलहाल अभी के लिए मतलब आप खुद सोच के देखो ना, अगर आप यहाँ से सेलिंग भी करते हो, मान लो यहाँ से आपने सेलिंग भी शुरू करी कि ब्रेकआउट ब्रेक डाउन जो भी बोलते हो आप लोग, कि यहाँ से स्टार्ट भी हो गया है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? आपका रिस्क टू रिवॉर्ड का होगा। सबसे पहले एंट्री करने से पहले ना एक ही चीज़ पूछनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये एक एंट्री थी यहाँ पे, और मैंने ये सेल साइड की एंट्री नहीं ली थी। मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सी एंट्री ली थी। ये वाली एक एंट्री ली थी मैंने यहाँ से, BTST ट्रेड जो थी, ये एक एंट्री थी, और मैंने फर्स्ट कैंडल भी मैंने इसको अपना स्क्वायर ऑफ कर दिया था मार्च के फ्यूचर पे, ठीक है। तो ये छोटी सी, एक बहुत छोटी सी एंट्री थी। उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट इस कैंडल के नीचे जाएगी, ठीक है, और फिर एक ये शॉर्ट टर्म हाई बनाया था इन्होंने मार्केट ने, फिर इसको इसको टेक आउट करना चाहिए था यहाँ पे ना, इस टाइप से। तो बहुत अच्छी ट्रेड मिलती, मतलब अगर ये यहाँ से सीधा ऐसे खुल के और नीचे जाती ना, तो ये ट्रेड बाय साइड की लिक्विडिटी भी टेक आउट हुई है, और आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पे टैप भी किया। ऑर्डर ब्लॉक, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना कि इसने प्रीवियस लिक्विडिटी को टेक आउट किया है, देन नीचे मेल्ट हुई है मार्केट, फिर यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बनाई है यहाँ पे। फिर ये ट्रेड, अगर मान लो ये वॉर सिचुएशन नहीं होती ना, तो ये ट्रेड बहुत अच्छी बनती, लेकिन अभी वॉर सिचुएशन है तो बहुत जल्दी मार्केट को अपने मेल्ट हो रही है, अपने टारगेट को हिट कर रही है। बड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइप से ना पकड़ना मार्केट को। जैसे कि अगर आप देखोगे नेक्स्ट व्यू, अगर यहाँ से भी अगर ये सोच सकते थे कि अगर ये मार्केट नॉर्मल मार्केट होती ना, तो इस वाले पॉइंट पे ज़रूर मिटिगेट करती मार्केट। जैसे दिख रहा है शॉर्ट टर्म यहाँ पे बनाया है, जाने के बाद मार्केट मोस्ट ऑफ, अगर आप देखोगे पुराना, तो इस टाइप से मार्केट इसको यहाँ से टेक आउट करती, इस यहाँ पे कैंडल में मिटिगेट करती और फिर नीचे मेल्ट करती। बट ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में मार्केट है और सीधा मेल्ट होती जा रही है विदाउट टेकिंग एनी मेजर लिक्विडिटी। जैसे यहाँ पे तो हुआ था मेजर लिक्विडिटी, यहाँ पे टेकआउट हुई है, उसके बाद मार्केट नीचे गई फिर, बट वापस आपको री एंट्री का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे टैप ही नहीं करी मार्केट ने। लेट्स सी अब क्या होता है सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ के लिए तो आपका मूव बिल्कुल निकल चुका है, ये 300 पॉइंट नीचे खुलने के बाद फिर मेल्ट हो गई है, इसमें अभी कुछ और बचा नहीं है। सेकंड हाफ में देखते हैं, और शायद कल छुट्टी ही होगी गुड फ्राइडे की, बाकी फिर मंडे को देखेंगे कि किस टाइप से मार्केट रिएक्ट करती है।
how the savage can transcend it into something more refined without leaving strength behind. So I wear my finest threads, keep my instincts in my head, balance elegance and rage, write my story, turn the page. Savage gentleman I stay, yeah, living in my own way, yeah, neither fully tame nor wild, just a dangerous culture child. Savage gentleman, complete, where the refined and ruthless meet. They see the gold upon my head, don't see the burden that I dread. Every decision that I make carries lives that could break. No one asks if I'm okay, they just need me every day to be strong and never fall, to be everything to all. This is the weight of crown I wear, heavy with responsibility and care. They see the throne but not the cost, all the pieces that I've lost. The weight of crown bends my spine, but I'll carry it just fine. No one said that leading's fair, just the weight of crown I bear. Lonely sits the ruling man, doing everything he can to make choices for the rest, while his own soul finds no rest. They celebrate when things go right, play me through the longest night. Power isn't what they think, it's standing at the kingdom's brink. This is the weight of crown I wear, heavy with responsibility and care. They see the throne but not the cost, all the pieces that I've lost. The weight of crown bends my spine, but I'll carry it just fine. No one said that leading's fair, just the weight of crown I bear. Just the weight of crown I bear. I could walk away today, let someone else learn to pay, but something keeps me standing here, facing every doubt and fear. So I wear this golden chain through the pleasure and the pain, lead them through another dawn, even when my strength is gone. The weight of crown defines my days, but I'll carry it always. This is what I'm meant to do, bear the weight and see it through.
fight got hard, left me standing in the bleeding yard with broken shields and fading light. But I won't surrender without a fight. They always crumble into dust. They say there's no one left to trust, but someone has to hold the line, and that someone's gonna be mine. I'm the last guardian at the gate, holding strong against the hate. When everyone has turned to run, I stand here till the battle's done. The last guardian won't fall. I'll protect what matters most of all. They mock the honor that I keep. They don't see the tears I weep for a world that's lost its way. But I'll be here another day. No army stands behind my back, just conviction on this track. Every principle I defend, and I'll guard them till the very end. I'm the last guardian at the gate, holding strong against the hate. When everyone has turned to run, I'll stand here till the battle's done. The last guardian won't fall. I'll protect what matters most of all. They don't need to understand why I make this final stand. Some things are worth the sacrifice, even if I pay the price. Oh, when the dawn breaks through the night and they see I was right, I'll still be standing tall and free. The last guardian they'll ever see. Ghosts of better men, walking halls where fathers stood, trying hard to be as good as the legends they became, carrying their sacred name. Every choice I have to make, every path I have to take, haunted by their whispered voice, reminding me I have a choice. Ghosts of better men surround me, their shadows always seem to find me, living up to what they were, makes my vision sometimes blur. Ghosts of better men watch over every step until it's over. I carry forward what they gave, standing on the ground they paved. They face demons I don't know, built a world in which I grow, sacrifice without complaint. Now I'm trying to be a saint,
But I stumble, but I fall, wondering if I hear their call. Am I worthy of this line, of these better men divine? Ghosts of better men surround me, their shadows always seem to find me, living up to what they were, makes my vision sometimes blur. Ghosts of better men watch over every step until it's over. I carry forward what they gave, standing on the ground they paved. Maybe I'm not meant to be an exact copy of their legacy, but I can honor what they taught with every battle that I fought. So I'll walk with ghosts beside me, let their wisdom always guide me. One day I'll become the ghost for the ones who need me most. Ghosts of better men remain, living through my joy and pain. I'll make them proud before I'm done, becoming what they've all become. Forged in fire, tempered steel, every scar is something real. No army marching by my side, just my honor and my pride. They fight in numbers, safe and sound, but I stand on holy ground. One blade against the endless night, one soul committed to the fight. I'm the lone sword in the battle, hear my steel begin to rattle. No shield wall, no brothers cry, just my blade. And I, the lone sword, never breaks, fighting for what's at stake, standing where the brave have stood. One blade doing what it should. They say a man needs a brigade, but I've mastered every blade. Discipline is my defense, courage is my recompense. I don't wait for reinforcement, I am my own endorsement. Every swing is calculated, every strike is concentrated. I'm the lone sword of battle, hear my steel begin to rattle. No shield wall, no brothers cry, just my blade.